भरतपुर सेंचुरी की तरफ जाते हुए मुझे कितना प्यार है तुमसे, मेरे ही दिल से पूछो तुम, ये गाना भी तुम्हारे लिए है, ये जिंदगी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। This is on the rickshaw on the way to Bharatpur Sanctuary. Now these are spotted owls sitting on this tree, perched on this branch over here. 3 of these. Yeah, that's it. Bharatpur National Park. Well, I am here again with my wife on this 19th February to the Bharatpur National Bird Park, and we love this park all around in the forest, and now we're going to see this python from close by. See the bird, that beautiful babbler, and we are walking to see the python from a close quarter. Yeah, this python comes here and is hiding there. This python curling down over here, and it's basking in the sun. Yeah, wonderful. Beautiful flower in this national park. See? Wow. I love these small beautiful flowers. This park, National Bird Park, where we see pythons and beautiful flowers. Come here. On my anniversary, my wife scared of python, running away. Come here, my young beautiful lady. Come, I want to make video with you. No, she running away. Okay, bye. This is a kingfisher sitting on the branch looking for the fish in the pond here. And there are ducks. We are ducking down to get the fish. Everybody is out to get the fish. That is their food. Yes, the kingfisher. King of fishers. Look, this kingfisher. Wow. All peace and silence in this wetland and birds and marshy land. Different types of birds. See those. आज 35 सालगिरह पे
मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं पे आया जहाँ मैं 1984 में अपना हनीमून मनाने आया था। भरतपुर बर्ड पार्क, पक्षियों का सेंचुरी। यहाँ चारों तरफ पक्षी ही पक्षी भरे हुए हैं। ओह, देखिए, आज मैं इनके लिए गाना गाता हूँ। तुम्हें प्यार करते हैं, करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में रखते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले ले के जीते रहेंगे, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे। तुम्हें प्यार करते करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। Well, this is the walking lane of this Bharatpur bird sanctuary, the bird famous. And if you look to the left, there are these ducks and storks at a distance, grey stork and ducks, and you can hear the voices of the birds. You will find peacocks, deer, everywhere. So many ducks here. Oh yeah, see what they are doing. क्या कर रही हैं ये ducks? Wow, I love it. Oh, it's black ducks with white beaks. A family. Yeah. And bulbul flying away on that tree. Yeah. Wonderful. Listen. Silence and the sound of birds. Wow. I don't know the sound of which bird. Some bird. Yeah. Now this duck with the red beak. Earlier they were with the white beaks. It's a tree which has fallen due to a thunderstorm, but because it has got the sand to its roots, a peepal tree is still green, uprooted but green. Wow. Look at this painted stork trying to fish. So patient. Movement of its. The beak opened and gently walking around. Let's see whether it catches fish or not.
The birds have started coming back to the nests. See these two birds in the nest. As getting darker, they're coming back to the nest. Still in the process of trying to catch a fish. Learn patience from a stork and the painted stork. Oh, how still this stork is, just moving its beak, not to frighten the fish. Which one? This one, this. This is a agate. Agate, yes, yes. Oh, you see this bird eating something from the algae. See? Having nice colors on its head. ये बर्ड कौन सा फ्लाई कर रहा भाई? ये पिंटेल है सर। डक से ये फ्लाई कर रहा है। Walking with us on the road. Yeah. Hello stork. Oh, not that baby. It's flied away very well. इधर से चले. गीक भी आई बढ़िया। The trees have become full with the birds. Wow. नहीं बेंच होगा तो 5-2-4 मिनट बैठेंगे हैं। नहीं बैठने का समय नहीं। अगली हम चलेंगे। साइकिल आपका साइड में कर लो इसको। बैठने का समय नहीं है सर। कल बिठाएंगे आपको, कितना बैठना चाहते हैं। कल हमको आप बोलोगे चलो, और आज अभी हम आपको चलते हैं। टाइम है मैडम डियर का, बच्चे पैदा करते हैं ना पानी के बीच। चीतल हिरन, ये मेल है। हाँ अंदर बारहसिंगा भी है। नहीं बारहसिंगा नहीं, वो देख बारहसिंगा नहीं बाबूजी मेल है। बारहसिंगा है वो भाई। बारहसिंगा देखो इतने तो सींग है उसके। चीतल है बाबूजी। चीतल के इतने सींग होते हैं? क्यों नहीं होते, चीतल का मेल है। आप देखो ना उसको, स्पॉट है बॉडी के ऊपर। हाँ स्पॉटेड तो है ही, स्पॉटेड डियर कहते हैं ना जिसको। स्पॉटेड डियर है सर। मेल भी है फीमेल भी है, दोनों है। हाँ दोनों स्पॉटेड डियर। बारहसिंगा अलग होता है।
अच्छा, इसके सींग तो बड़े बड़े लगते हैं ऐसे। गिर जाते हैं सर हर साल इसके, फिर नए दोबारा आते हैं भागने से, फाइटिंग से। चलो फिर हम बोल रहे हैं निकले। दिन पे दिन पानी सूखते जाएगा। Dr. Dewan. I could do without that. From the How beautiful this painted stroke. Wow. So graceful.
जो लेट हो रहा है. Wow, spotted deer in this Bharatpur Bird Sanctuary. Wow, so beautiful. We have spotted a spotted deer. Deer, you are very very dear. चलो जरा साथ साथ चलेंगे इसके. Deer is very dear to me because its name is deer, so it is so dear. Love you, sweet dear. Bye bye. हेलो डियर ने इस वक्त सड़क पे आ गए हैं एंड दे आर रनिंग अराउंड सो वी आर वॉकिंग